दशकं 6 विराट् स्वरूपम्। एवं चतुर्दश जगन्मयतां गतस्य पातालमीश तव पादतलं वदन्ति। पादोध्वदेशमपि देवरसातलं ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन्। जङ्गे तलातलमतो सुतलं च जानो किञ्चोरुभागयुगलं वितलातले द्वे। क्षोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिः पक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे। ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम्। एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरपि अन्ये निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते। त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द चन्दांसि केशवघनास्तव केशपाशाः। उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे। निःशेषविश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णो दिशो श्रीयुगलं तव नासिके द्वे। लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्टौ तारागणाश्च मनश्च दंष्ट्रा। मायाविलास हसितं शसितं समीरो जिह्वाजलं वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः। सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाबुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः। पृष्ठं त्वधर्मयः देवमनस्तुतांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष। कुक्षिसमुद्रनिवहावसनं तु सन्ध्ये शेफप्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः। श्रोणीस्थलं मृगगणा पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखागमनं तु कालः। विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहो चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधे। संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः। नाड्यः सरित्समुदयस्तरवश्च रोम जीयादिदं वपुरनिर्वचनीयमीश। ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः। तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान्। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।